Hello, everyone. We are here for a session of Vibrant Networking Forum, and we have with us two very charming ladies, Balpreet and Lily Swarn. And Balpreet is our speaker of the day. In conversation will be Lily Swarn, ma'am. Both are acclaimed in their own right. Balpreet is a former journalist, a filmmaker, a writer, a poet. And Lily Swarn, ma'am, is an author and a poet, a very charming host. There's not much for me to say except welcome. Thank you. And Thank you very now I much, leave it. Vivek. Thank you, Vivek. All Yeah, right. yeah. Thank you, So, ladies. I leave it to you to take. thank you for introducing us. So, June, friends, is limping away slowly but surely. And in its wake comes some merciful showers, Balpreet. And Yeah. let's start by thanking God, I'm a woman, both of us. And I'm going to say a few lines from one of my acclaimed poems called Thank God I'm a Woman. So it Okay. goes like this that a Rubik's cube that God created, rubbing his hands with glee, a Venus statuesque, curvaceous, mysterious, unfathomable, myriad facets intricately woven in silken brocade with gossamer threads on a handcrafted wooden loom in the by-lanes of Benares. And to you, good Balpreet, my friend for today, for achievers like you, मैं कहना चाहूंगी तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इससे एक परचम बना लेती तो अच्छा होता तू इससे एक परचम बना लेती तो अच्छा होता so a very warm welcome on behalf of Vibrant Forum to you Balpreet and Thank you so much. it's an era where women administrators are leading their countries to health. So we should also, with Kafi Azmi Saab, say, कि उठ Yeah. मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तेरे तुझे. साथ ही चलना है तुझे. Gee, it gives me immense joy to have here a senior print and TV journalist, now a film writer and film director, Balpreet Kaur. What a pleasure to have you amidst. How do you feel Thank you being here so much. today? How do you feel It's being here a today? it's a very new experience for me, Lily ji. I've never explored this platform, so it's very nice. And the way you are quoting Sahir and Kefi Azmi, it just makes me immediately relate with you. Perfect. So we're going to have a good time in this conversation. Yeah. And let me tell the world all about you first. This wonderful, multifaceted lady. In your 2 decades career, you started with the Indian Express, went on to the Hindustan Times, and you were the entertainment head of Day and Night News. You were the director of an acting academy called My Dream Academy. Oh my God. And the plot thickens. You also wrote coffee table books for Verka. I remember it was called The White Light. And then you Yeah. wrote a documentary on the Department of Women and Child Development and Social Welfare, and also a documentary on the Char Sahibzade. Oh my God. Yeah. And now, my dear Balpreet Kaur, you're a full fledged film writer and director. And friends, you must hold your breath to hear this that she has already had 3 films screening on the PTC box office called Hari Chutney, Main Haan Na, and Mera Kuch Saman. Ladies Yeah. and gentlemen, let me present the lady who's now going on to big screen feature films. They're on their way. So सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी बलप्रीत that how did the switch from print journalism to filmmaking actually happen and did your work as a journalist help you in any way? Go ahead. Absolutely, Lily ji. I was always very passionate about cinema. I grew up as a theater actor, and there was a time when I went to Bombay to become an actor also. But Wow. but fate intervened, and I was very happily back in Chandigarh, and I continued with my journalistic career. So across my journalistic career, I met n number of actors, top actors like Amitabh Bachchan, Rekha, and filmmakers, all kinds, the cream of the Hindi film industry and others, besides other Great. Wow. fine artists. So I जी जी think जी. all along this while, मेरा जो जज्बा था सिनेमा को लेके वो पकता रहा अंदर ही अंदर. And then life took me across from print journalism to television.
And I think television was what, because as an entertainment head, I was introduced to the world of camera and script writing and stuff like that, editing. सो आई थिंक उससे मेरे बीज जो बोए गए, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे चल के आई डिसाइडेड टू बिकम अ फुल फ्लेश्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अ राइटर, एंड नाउ अ फीचर फिल्म राइटर एंड अ मेकर. See, Balpreet, it has been a loss for the Bombay film industry. I'm very sure you're such a charmer and you're so talented. But chalo, ab unka to jo bura hona tha ho gaya. But we are going to gain from you because you're up north and you're doing all these wonderful things. So अब हमें बताएं अपनी coffee table books के बारे में, और खास तौर पे जो आपने वेरका के लिए बनाई, and also the जी. other one. जी. या जो वेरका के लिए जो मेरी कॉफी टेबल बुक है, एक्चुअली दैट इज द मेन वन दैट आई हैव डन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. वेरका वाज ग्रेशियस इनफ टू गिव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम. सो आई कंसीव्ड द होल थिंग कि उसमें जाएगा क्या, उसको कैसे करेंगे. दे जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ फार्मर्स इन पंजाब who are working, who are putting their milk in वेरका. सो दे वो, हाँ, तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के कवर हुए. हर डिस्ट्रिक्ट से दो दो फार्मर्स हमने उन्होंने चुन के दिए मुझे. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज वी डिड अ ट्विन प्रोजेक्ट. आई प्रपोज टू देम दैट सिंस वी आर गोइंग आउट एनीवेज, so I'm writing the coffee table book anyways, so I'll make a documentary also for you. So I made a documentary also titled White Lights. So you made a coffee table book for Verka and you also a documentary for them. So you're doing two things at the same time, two different things. On the same subject. Okay. So and what about the other documentary, the other one, the Department of Social Welfare? The Department of Women and Child Development and Social Welfare, they approached me to do a documentary for them, to basically talking about their self-help group Mela, which they organized in October. So that was also very beautiful because it gave me an insight into how these self-help groups work, and how they empower women and children. Yeah. And what about the one you made for Bir Devinder Singh Ji? That should have been fun too. A completely different, experience, different personality. What was that all about? That was my first, I think that was my first major documentary. Mr. Bir Devinder Singh is a scholar in Sikh history, and especially when it comes to the Char Sahibzadas. So I was already working on the Verka project when these guys came in. And I think it was a blessing because Guru Gobind Singh ji de bachchiyan te jehdi documentary bani wo meri pehla काम निकलिया actually. That was a blessing. बहुत सोहना एक divine venture तुसी शुरू किता, मुबारक हत्था नाल. So I'm sure it will take you very far, and everybody in Punjab feels very strongly. साडा एक मतलब रूहानी रिश्ता जिहा है उन्हां दे नाल, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, है ना, चारां दे नाल, साहिबजादियां नाल. So very lucky lady. I mean, you must be very proud of that work that you have done. So अच्छा, the plot thickens, and now that you are a feature film writer and director, ये सारी कहानी, that's a mega thing, isn't it? तो ये मतलब ये जो आप अग्रसर हुई हैं इस तरफ, इसकी क्या कहानी है, बताएं. सिनेमा, मुझे आई रियली थैंक गॉड कि मैंने सिनेमा बनाना सीखा कहीं से नहीं है. मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली. जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीविजन, and I have been a keen watcher. I have been a very, very detailed watcher of cinema, and I have grown up on a dose of Bimal Roy, Rishikesh Mukherjee, Satyajit Ray, and वो सारे पुराने जो हमारे क्लासिक्स हैं. अभी सीक्रेट है जो आपकी कहानी भी लिख दी है, क्या हो रहा है मुझे बताओ जरा. And then we'll go back to the PTC films. First, you tell me about this rather exciting thing which you're, already written and you're about to, embark on. इसके बारे में थोड़ा सा बता दो ताकि उत्सुकता बढ़े. अभी ज्यादा नहीं मैं बता सकती, लेकिन सिर्फ ये है कि दो बड़ी फिल्में एक मैंने लिख रखी है, और दोनों ही पंजाब से रिलेटेड हैं. पंजाब के बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थे, उनके ऊपर दोनों ही बायोपिक्स हैं. तो ये लॉकडाउन खुलेगा तो आई विल गेट इन फर्दर टॉक्स विद द प्रोड्यूसर्स हु आर इंटरेस्टेड, हु हैव शोन इंटरेस्ट,
So This is fascinating. I'm already, sitting on the edge of my rather interesting chair today. Because a girl, a Punjaban, writing about Punjab and then going on to create visual, something which will be left for posterity, बड़ी वड्डी गल है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब एक पुण्य ਦਾ ਕੰਮ भी है ना? You're leaving something for people behind you who are going to be watching this thing. Great. All my luck with, for you, and best wishes from thank all you, of us who are thank you, watching you. And now thank you. let's talk about your interesting films that you made for PTC Punjabis, the box office PTC. उसके बारे में बताओ. Okay. हरी चटनी के बारे में. मैं इससे पहले ये कहना चाहूंगी कि मेरा सिनेमा जो नॉर्मल पंजाबी सिनेमा जो अक्सर देखे जाते हैं उससे बहुत डिफरेंट माना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ हिंदी सिनेमा देख के, और आपको मैंने बताया मैंने कौन सा सिनेमा देखा है, 50s 60s 70s का सिनेमा देख के बड़ी हुई हूँ मैं. So there's a flavor of amazing. that in your Punjabi work. Wow, that's very unique. जी. That's a unique thing. जी. Yeah. अच्छा. या सो अब मैं जो कि एक बिल्कुल नया सीखा भी नहीं है, तो मेरे जैसे एक जर्नलिस्ट टर्न्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड फिल्म राइटर के लिए पीटीसी बॉक्स ऑफिस अपने आप में एक बहुत बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म रहा, क्योंकि पीटीसी बॉक्स ऑफिस क्या करता है कि अगर एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर के पास मैं जाती और जिस तरह का सिनेमा मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, डिटेल्ड सिनेमा, वो शायद इतनी ओपन ना होते, लेकिन पीटीसी बॉक्स ऑफिस इज फुल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. सो उन्होंने तो हरी चटनी मेरी पहली फिल्म थी. हाँ. एक तो नाम बड़ा चस्के वाला नाम है, चटपटा सा नाम है, तो फिल्म बड़ी अजीब और अलग सी होगी. क्या कहानी थी उसकी? What was it all about? पंजाबी ਵਿੱਚ हरी चटनी समोसिਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, है ना? हाँ, पकौड़े सी ਉਹਦੇ ਚ, ਪਕੌੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ. ਪਕੌੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਅੱਛਾ, good. ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਚਟਨੀ. Good. And what about the next one, मैं हाँ ना? मतलब is it a take on मैं हूँ ना? Is it Shahrukh Khanish or not? No, not at all Shahrukh Khanish. Actually मैं हाँ ना जड़ी है ना मूवी, वो बेस्ड है एक it is inspired from a true incident. ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ ਲੜਕੀ ਸੀ. ਅੱਛਾ. ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਓਂਸੀ ਨੂੰ मतलब ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੇਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫੜਾ. ਅੱਛਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ. Exciting. Very nice. I'm sure it must be a new take on a post-marriage of a rape victim. Very unusual. And I'm sure it's your take will be very sensitive. That's what I'm saying, that today is when two women are talking, we know that we have a different worldview. Sada nazariya cheezan da vakhra hunda hai. I'm so sure that you give it a lot of finesse, a lot of class, a lot of sensitivity when you make something like that, है ना? Wonderful. I hope so. करेंगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ थर्ड ਜਿਹੜੀ इंटरेस्टिंग पीटीसी वाली किताब है, मेरा खुद सामान. हाँ, अरे वाह. तो पता चलता है कि आपने गुलजार की पिक्चरों को भी देखा है और कुछ ऐसी शायरी भी पढ़ी है. गुलजार तो मेरे सोलमेट है, मतलब गुलजार इज माय लाइफ. I can see that. तो तुम्हारे पास पड़ा है उनका कुछ सामान? हाँ, एक बहुत खूबसूरत मुलाकात है जो मेरी उनसे हुई थी, एंड उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था. एनीवेज, सो ये मूवी मैंने लिखा भी है, उसके ऊपर एक मैसेज आता है उसके पहले कि this film is dedicated to Gulzar and the lightness of his being. Oh wow, I'm so glad you did that. That would have been the best thing to do actually, because it was
that very phrase sets off so many emotions. And I mean, when you make a film on it, I'm sure it must be power packed, right? तो उसके बारे Yeah. में कुछ बता दी, मेरा कुछ सामान. मेरा मेरा कुछ सामान एक जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का एक प्ले था लिली जी, इफ यू रिकॉल, आर्म्स इन द मैन, Oh yes, totally, है very ना, powerful. चॉकलेट हाँ हाँ चॉकलेट बिल्कुल. क्रीम सोल्जर. सो हाँ हाँ. बेसिकली वो कहानी जो है ना वो मेरे जहन में थी कहीं. All right, तो मैंने उसमें बकायदा मेंशन किया है कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्म्स इन द मैन. all एंड right. सो मैंने कहानी बनाई है इंडियन सोल्जर और पाकिस्तानी लड़की के बारे में. एंड I, because I'm a Fauji wife. You know, one gets to do so many real life stories. मैंने लगता है कोई दसदा क्यों नहीं है कहानियाँ. लेकिन ये सरहदा कहानियाँ आजकल what we are going through all this mayhem and hearing all this sordid stuff. I've actually lived it. So I'm so glad a person like you actually gave it, a voice. ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ? या ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਦੱਸੋ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈਵ, ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. अच्छा. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਮਤਲਬ ਐਲਓਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ठीक है. ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ 80% ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ हाँ. ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ. So, अच्छा. so they talk about everything which matters. You know, the concept of bravery, the uselessness of war, and Oh wow. you know how love is a strong force, and it can, if it is meant to be, then it happens. You know, so ये You're a सारियां woman चीज़ां. after my heart. I believe in this. I write peace poetry and I get awarded for that. So love is the mantra. And if you're making films that are propagating anti-war sentiments, you're a woman after my heart. Balpreet, I have to meet you in real life. Once the lockdown is over, I need to give you a real hug for that. Shabash, Thank Vibha you. ji, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Okay, I think we are about to wind up and we have the next very interesting panel coming up. But I can't let you go without you telling me some more about your future plans. Is it just feature films which are kind of all over your brain? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ? I think Liriji, essentially मैं एक writer हाँ. I love, ठीक है. like I told you about my coffee table book and some booklets I have done for the Department of Social Security and Development, Child Development and Women Development. ठीक So है. I am essentially, and I've done I've edited a manifesto for a leading, so I'm an editor and a writer. So I'm looking अच्छा. forward to doing books for people, interesting subjects, coffee table books and more books for people, and write my own book also. And ठीक. and then of course I want to, cinema is definitely my clear cut passion, and I'm going to write films and make films, god willing. And Inshallah, inshallah. Why not? एक और है, एक और चीज है मेरी विश लिस्ट में. हाँ. आई लाइक टू That's यूज, आई एम आल्सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सो आई लाइक टू यूज माय वॉइस. अगर मैंने कदे चांस मिले ना ते मैं रेडियो ते कोई ना कोई प्रोग्राम होस्ट करूंगी जरूर. ठीक है. So I think this is wonderful because I hosted a radio show in America called Geet Bahar, and it was also very interesting because there was a gentleman from Pakistan, a Gora gentleman who Urdu in America. Was me. So I think radio and media has such a far reach. ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ. So I'm sure it'll be fun, Yeah, and that goes to prove that art has no bounds. We kind of blend into each form. Like have boys wanting to paint things they have written, an artist wanting to film something, है ना? I'm sure that when you see a book, you want to create a screenplay out of it, है ना? So that is fun. चलो ये तो yeah, बड़िया मजेदार गल्लां हो गईयां. So are you going to be interviewing Ataullah Khan tomorrow? He's one of my favorites. yeah, that's right. Yes. Yeah. So, when we were Yeah, posted in Katwa, it was on the border of Pakistan. So I used to go and teach English in a college there, which is just a few miles from Pakistan on the border. wow, You think wow. बच्चा दसी Balpreet 16 साल दा 12वीं क्लास था.
तो मैं पढ़ांदी सा पर वो गांदा सी सिर्फ अता उल्ला खान दे गाने. So he would sing Okay. those, those beautiful, nostalgic, weepy songs. They, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, I know. you're lucky that you're going to be talking to him. And मेरा सलाम उनको Yeah. और बहुत सारी दुआएं. मैं ठीक जरूर है? दूंगी, मैं जरूर दूंगी ठीक उनको है. सलाम आप तो आपका. आप क्या पूछने वाले एंड हो? आप क्या पूछने वाले हो उनको? वो उनकी अता उनकी उल्ला. खूबसूरत उनकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है लिली जी? मैंने उनकी जितनी भी इंटरव्यूज देखी हैं, उनमें ना जी. बिल्कुल पर्दा नहीं है. अपनी जिंदगी को लेके, अपनी इनर वर्ल्ड को लेके कोई पर्दा नहीं है. सो हाँ. मुझे बहुत जबरदस्त मौका मिलेगा टू डेल्व डीपर. आई होप आई एम एबल टू एक्सट्रैक्ट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ हिम. सो उनके Absolutely. म्यूजिक के बारे में तो बात करेंगे ही. आई थिंक उनकी ठीक जो है. निजी एहसास है ना, उनके बारे में बात करेंगे. And he was a rebel. I remember he had to, as a boy, he went away from home. Okay, so Balpreet, it has been a very, very joyous conversation. I don't want it to end, पर मैंने लगता है कि हौली हौली सानू fade away करना पवेगा. कोई किसी सोनी गल मैनू पूछनी हो या करनी हो, now is the time. लिली जी, So, मैं थोड़ी पर्सनल स्टोरी भी थोड़ी जी सुनी कल. मैं ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ any enna enthusiasm at this age, enna enthusiasm और any positivity रोज किਵੇਂ पैदा करते हो? मैं एक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਨਗੇ, ਔਰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ. So that has been a lifesaver for me. I could have been a depressed mother whose son died sitting in a corner and moping, but no, I want to show that when a life ends, it is not the end of another life also. We have these spate of suicides, of depressions, of maniacs who are, moping in corners. No. So I want to tell the world that a bright lipstick, a bright colored dress, and a smile on the face is the beginning of feeling good. And if we don't feel good, we have no right to carry on. It's such a beautiful gift. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ. Another thing is I share my passion for love. I'm constantly in love with something, with someone, with an art. So love makes the world tick. I want to meet people across the world. I write about colorlessness. I write about ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ. So I think that is what is going to make us tick. And more power to you, girl. It's a joy to meet someone as enthused about her work and career as you. And now I think we should stop and tell Niharika to join us, though we have about Yeah. 7 minutes. So ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ Okay. ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ. It's a conversation. ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ. Yeah, absolutely. ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਪੋਇਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਇੰਪਲਸਿਵਲੀ ਬਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ? Actually, that's a sweet question, sweetheart, because I don't sit. I believe that ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, it should be immediately penned. So I don't pen it. I just tick tock on my little mobile phone, and my 4 books are written on the cell phone because ਉਸੇ ਵੇਲੇ, Oh, wow. right then, do it then and there, the here and now, the 1984 thing. You must keep it distilled and pure, like the essence, the aroma oil. I don't believe in editing my poetry. That is why I write in different genres. I let go in prose. So I write novels and I write essays. I also write about food, but poetry should be just as it has come to you. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, Right. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਏ, it should all just be there as a collective consciousness and pour out in words. So that is what I Yeah. think poetry does for me. And like you, I believe in different genres, and just let your art take you over. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ? So wonderful यही होता talking है, to you. यही होता है. And And poetry, हाँ जी, Hanji, मैं I also write poetry. I have written some wonderful. stuff. I'll send it to you. But I Please think do. the main stuff that I got from you is, and everybody says that also. I mean, I've met so many artists and writers across. I think creativity is a big blessing. If we're able to Yes. create something, and if It is, we're able to write, it is if we're able to cathartic. write, Ah, it's it cathartic. is. I was coming to Yes. that. I Yes. think And Greek philosophers, Aristotle, and all of them were so right that hamartia, the tragic flaw, gets covered up, and the catharsis kind of wipes away the pain. There is a lot of talk about नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए उस तरह होना चाहिए but art ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ critique नहीं कर सकता ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ it's not your personal thing, it's for the world. So to each yeah, person who ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ on screen, I may have formed an opinion about you, you may have formed about me, but we do know that appearances are deceptive. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, layers ਖੋਲਾਂਗੇ, we'll find different women lurking in very, very cozy corners. What do you say? Right? absolutely, absolutely. So a lot of बिल्कुल love सही. to you, lot of Thank blessings from me, and also a lot of ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. More power to your filmmaking and writing career. God bless. And Niharika, it's time for you to come on, sweetheart. Waiting for you, Thank you, Lily Niharika. ji, and best of luck for you also, Lily ji. Thank you. Nice talking to Thank you. you. God bless. तो See you. आपने बुलाया मैम और हम चले आए एंड Oh बलप्रीत God. मैम व्हाट एन अडोरेबल कॉन्वर्सेशन इट हैज बीन ऑल दिस व्हाइल आई हैव बीन पूरी कगल यू नो दिल खुश हो गया सो थैंक यू सो मच बलप्रीत मैम एंड लिली मैम फॉर enlightening us with those conversations and it was actually very interesting and very delightful. So if you see the audience's comments on the right side, you know, Usha Bhatia ji, she says, have you seen Balpreet act in a play? May you optimize your creativity. And Narinderjit Kaurji says, Lily Swarn, a spontaneous poet, of course, like always. And Thank you, Narinder. Thank uh, you. Ajit Chima ji says, Mark Twain once wrote, make no small plan. Of course, Thank zindagi you. badi honi chahiye. True. Thank you And from both Balpreet and me, and God bless you all. And time for us to say Sat Sri Akal, bye bye, and Allah Hafiz. Bye. Namaskar. Bye.